Good morning, students. Welcome back once again. This is Joe with you, your assistant teacher. Good morning, all. Today, I hope you all are fit and fine at your homes. This pandemic period, we can go to the school due to COVID-19 virus, corona virus. But today, we are going to learn different things and very exciting things together. So, once again, I welcome to all. Let's start your today SST class. The students, class 4th, listen the first lesson, Physical Features of India. Look at the textbook in front of the page. The first paragraph is going. India is vast country surrounded by natural beauty. It is located in the southern part of Asia. It stretches from Jammu and Kashmir and Ladakh in the north to Kanyakumari in the south. To know more about India, let's learn about its physical features. You know that, dear students, our India has very vast country and natural beauty. It's located in southern part of Asia. हमारा देश एक बहुत सुंदर है और विशाल देश है और हमारा देश स्थित है दक्षिण भाग में. हमारा भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है. आओ बच्चे, हम अब हमारा भारत के बारे में अधिक जांच करेंगे. To know more about India. Next paragraph, Physical Features of India. India is the seventh largest country in the world. The stretches from west to east in south about 933 kilometers, and from north to south it's about 3214 किलोमीटर. हमारा देश दुनिया का 7th सबसे बड़ा देश है. It is the 7th largest country in the world in area and the second largest population. लगभग 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण से लगभग 3214 किलोमीटर है. इंडिया में लगभग 1.37 बिलियन की आबादी वाला दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है our country. Our neighboring country are Pakistan, China, Myanmar, Sri Lanka and Bangladesh are some of India's neighbors. हमारा पड़ोस वाला देश आप पहले भी जानते हैं. You know that Pakistan, Myanmar, China, Sri Lanka and Bangladesh etc. are our neighboring countries. India has a coastline of about 7,517 kilometers. भारत का कोस्ट लाइन लगभग 7,517 किलोमीटर दूर है. The southern part of India is peninsula and surrounded by Bay of Bengal along the eastern coast, the Arabian Sea along the western coast and Indian Ocean on the southern coast. Southern part of India is peninsula and surrounded by Bay of Bengal. भारत के दक्षिण भाग में एक पेनिनसुला मतलब एक प्रायद्वीप है. और बंगाल की खाड़ी और पश्चिम तट के साथ अरब सागर है. Arabian Sea along the western coast and the Indian Ocean on the southern coast. और दक्षिणी तट पर हिंदू महासागर से घिरा हुआ है. Indira Point in the Andaman Nicobar Islands is the southernmost tip of the country. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा बिंदु देश का सबसे दक्षिण छोर है. Tip of the country. Indira Point and Andaman Nicobar Island is the southernmost tip of the country. There are several climatic and geographical differences across the vast stretches of our country. हमारा देश के विशाल हिस्सों में
कई जलवायु और विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं. There are several climate geographic differences across the vast stretches of our country. Our country has different kinds of landform. India is a beautiful land of vast plain like that, beautiful hills, high mountain, extensive plateau, forests, island, and large desert, etc. Some places are high above the sea level, others are very low. हमारे देश में ऊंचे पहाड़, मैदान, पठार और झाड़ियाँ और रेगिस्तान भी है. कुछ प्लेस समुद्र तल से ऊंचे है, कुछ स्थान कमी भी है, कुछ स्थान चट्टानी है और कुछ स्थान बहुत गर्म है और ठंड है. Some places are rocky, some places are sandy, and some places are extremely hot. कुछ पत्थरों and रेत and extremely hot, other are very or cold. Let's study in detail about natural region of India. और हमारा क्षेत्र के बारे में हम आज जांच करेंगे. India can be divided into 6 natural regions. In this lesson, we will study the first 3 regions which are follows. हम हमारा आज 6 natural regions के बारे में आज हम जांच करेंगे. Third one is the northern mountains or the Himalayan ranges. Second one is the northern plains, and last the Great Indian Desert, the other name of Thar Desert. मतलब उत्तरी पर्वत या हिमालय पर्वतमाला और उत्तरी मैदान, नॉर्थर्न प्लेन्स एंड ग्रेट रेगिस्तान, अदर नेम ऑफ थार डेजर्ट. The first is the northern mountain or the Himalayan ranges. The northern mountains lie in the northern part of India and separate the Indian subcontinent from the Tibetan plateau. ये रीजन भारत का उत्तरी भाग में स्थित है. भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बतन प्लेटू से अलग करता है. तिब्बतन प्लेटू में एक प्रकार का पठार. It is characterized by massive mountain ranges of the Himalayas, the Karakoram, Zasgar and Ladakh. These Himalayas ranges from act together and run parallel to one another. ये रीजन हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला है, लाइक काराकोरम, साकर, लद्दाख एक्सेट्रा. इस प्रकार का विशेषता भी है ये नॉर्थर्न माउंटेन और हिमालयन रेंजेस में. These Himalayan ranges from the act together and run parallel to one another. ये हिमालय पर्वतमाला एक साथ चाप बनती है और एक दूसरे के समांतर चलती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिमालय इज ए संस्कृत वर्ड वर हिम मीन्स स्नो and alaya means abode or home, means of abode of snow. बर्फ का वास है. Dear students, your first video has completed.